Okay, so in a previous lecture we have discussed about the multiple allelism and pleiotropy. In today's lecture we will be started some other inheritance, like we will be started with first the collaborator genes. Collaborator genes. Again, these are the pair of genes, either they are present on the same chromosome on a different loci or on a different chromosome on a different loci. Clear? So, in case of collaborator genes, here we see that the genes are expressed, the expression in collaboration. यहाँ पर क्या होगा, जो जीन्स हैं आपके वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन में फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं. दिस inheritance is also called as a novel inheritance, right, or a novel phenotype. Novel means the new phenotype. इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, we have seen in a dihybrid cross a new trait or a new phenotype. The ratio remain the same as in Mendelian dihybrid ratio, that is 9:3:3:1. But what will happen, the trait which we have get, इसमें लेकिन जो हमें traits और characters मिलेंगे that are completely different from their parent. Mendelian dihybrid cross में हमने क्या देखा था, in Mendelian dihybrid cross 9:3:3:1, but there should be no new trait, कोई वहां पर नया कैरेक्टर या न्यू फिनोटाइप नहीं था. But in case of collaborator gene में हम क्या देखेंगे, here each and every allele of a gene independently express itself as a character. समझ आई बात. यहाँ पर हर एक इंडिपेंडेंट जीन क्या कर रहा है, किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करेगा. देखते हैं कैसे. सो इन दिस वी विल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ comb shape in fowl. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, शेप ऑफ comb इन केस ऑफ फाउल. फाउल के केस में हम क्या देखेंगे, कॉम की शेप देखते हैं. फाउल के ऊपर जो कॉम प्रेजेंट होता है उसकी शेप हम लोग देखते हैं. ठीक है. सो हियर वी आर टेकिंग, सपोज वी आर टेकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द जीन्स. जीन्स की पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है. ठीक है. जीन्स को लेके हाउ मेनी टाइप ऑफ शेप वी गेट. ठीक है, कितने टाइप की हमारे पास शेप है. एंड हाउ द बेटसन, जो बेटसन ने क्या किया था, क्रॉस कराया था, फिर वो क्रॉस देखेंगे हम. एंड बाय दिस क्रॉस वी आर टेकिंग द कैलकुलेटिंग द सेम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 9:3:3:1. बट स्टिल द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. लेकिन फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे. सो हियर वी हैव 4 टाइप ऑफ कॉम शेप. 4 टाइप की हमारे पास कॉम शेप है. कौन कौन सी होगी, वी हैव rose type, we have P type, we have single type, and we have here walnut type. ठीक है. So the gene which is responsible for rose type comb is capital R. The gene responsible for P type is capital P, right? The gene responsible for the formation of single type of comb is both the gene in its recessive form, right? And in case of walnut type में we have get both these genes in its dominant form, right? So here how many possibility we have? 4 possibilities. 1, if R is dominant, only R is dominant, then rose type comb. If we get the P dominant,
the phenotype is P type. If we have both the genes in its recessive form, then the comb shape would be single type. And if we have both the allele in its dominant form, अगर दोनों ही एलिल हमारे पास किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, so the type which we get is a walnut type. Now we'll see how we just show the inheritance. इनका inheritance कैसे होगा वो हम देखते हैं जीन्स का. So बेटसन ने क्या किया, this inheritance is performed by Bateson. Bateson ने इसको परफॉर्म किया था. He take Rose and P as a parent. उनने पेरेंट जनरेशन जो ली वो कैसी ली थी, रोज टाइप एंड पी टाइप. चलिए देखते हैं. तो रोज टाइप लेते हैं हम लोग, R R P and P. Clear? Here R is dominant. So if R is dominant, so it means this is the rose type. कैसी शेप होगी यहाँ पर, रोज comb is crossed with the P type. और P type में क्या है, P is dominant. So here small r, capital P and capital P. So this parent is कैसा है, P comb. और उसमें comb कैसा है, P type. So ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन. So the gametes which we get from here, यहाँ से जो हमें gametes मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, R and small p. From here small r, capital P. So these are our gametes. So F1 individual जो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, F1 इंडिविजुअल मिलेंगे. दैट वुड बी R P and what, small p. All the F1 individuals or all the heterozygote were कैसे होंगे ये सब, both the gene are in its dominant form. So here we get what, a new or a novel phenotype. Instead of the same, यहाँ पे सेम नहीं मिला. अगर हम यहाँ टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस की बात करेंगे, सो इन टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस हमें क्या मिल रहे थे, F1 इंडिविजुअल आर ईदर रिजेंबल टू वन ऑफ ईच पेरेंट, वो अपने पेरेंट जैसे थे. बट हियर वी गेट द न्यू ट्रेट और अ न्यू phenotype. So if both the genes are present in its collaboration form, they create the new phenotype, right? And that phenotype is of walnut type. तो यहाँ पर कैसा था ये, all the F1 individual were walnut comb, right? And if they selfed, अगर इनका क्या किया गया, सेल्फिंग की गई टू फाइंड आउट द F2 रेशियो निकालने के लिए. सो कराइए इनकी सेल्फिंग, R P and P is crossed with R P and P. So रेशियो बनाइए, यहाँ से गैमेट्स बनाइए, 4 gametes each. What are the possibilities? R P R small p. यहाँ से क्या बनेगा, small r capital P and small r small p. So here we get the 4 gametes. From this parent we have get the same 4 gamete, right? So now we just plot the Punnett square for this. इसके लिए हम Punnett square बनाते हैं. So let's draw the Punnett square. 4. Okay, so now
1, 2, 3 and 4. Place the gametes on one margin. R, P, R, P, R, P, R and P. Here also the same. R, P, R, P, small r, capital P, small r, small p. When they fertilize or fuse with each other, देखते हैं. So capital R, capital R, capital P, capital P. Here capital R, capital R, capital P, small p. Here capital R, small r, capital P and capital P. Here capital R, small r, capital P and small p. Here capital R, capital R, capital P, small p. Here capital R, small p and small p. Again capital R, small r, capital P, small p. Capital R, small p and small p. In this case capital R with small r, capital P with capital P. Here we have capital R, small r, capital P, small p. Here we get small r and small r, capital P and capital P. Here again small r, capital P and small p. Here in case last one, capital R, small r, capital P and small p. Here in this box capital R, small p and small p. Here in this case small r, small p and small p. Sorry, capital P with small p. And in the last one small r, small p and small p. Now let's see the phenotypes. What are the different phenotypes we get from here? देखते हैं. So here this one is both the gene are in its dominant form, so it is walnut. This one is again walnut. Here again walnut. Again walnut. This is also walnut. This one is not walnut. This one is walnut. This one is also walnut. This one is also walnut. Not this one, not this one. This one is walnut. Not this, not this and not this. So how many of we get the walnut? 9. Right? 9 individuals were the walnut type. देखते हैं बाकी के. Let's check this one. Only R gene is dominant. When R gene is dominant, so the comp type is rose. So rose type count करते हैं. Rose type R. This one is rose type. Again rose type. Okay, this one P type. no. This one no. This one yes. This is rose type. Not this one and not this one. So how many of rose type? 3 individual were of rose type. Now let's see where only the P is dominant. देखते हैं P कहाँ dominant है. In this case P is dominant. So this is P type. Here in this case again P is dominant. P type. Here is also P dominant. So this is also P type. So how many of the offspring are P type? 3. Now where P and R both in its recessive form, that is the single type. So here this one is the single type. Only the one individual. एक individual कैसा है? Single है. Right? So what would be the ratio?
the same ratio which we have get in our Mendelian dihybrid cross. Clear? How? वही 12 बजे आया करो पूरे. लेट हो रहा है. स्कूल में आना पड़ेगा. स्कूल क्या करने गए? बुलाया था. चलिए, so what would be the ratio? 9:3:3:1. This ratio is similar to the Mendelian dihybrid ratio, but what is difference? Phenotypes अलग है. What is difference? Phenotype are different. In Mendelian dihybrid cross में हमने क्या देखा था? All the offspring 9:3:3:1 all were resembled to their parent. But here two phenotype are completely different from the parents. कौन से phenotype हमें different मिले? The walnut type is the novel phenotype, and this single type is also again the novel type. तो यहाँ हमने क्या देखा? The allele, each and every allele of a gene independently express a new phenotype. यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक जो आपका जीन पेयर यानी जो एलील है ऑफ अ जीन पेयर इज express itself as a new phenotype, right? And when these two present in its collaboration form, again the new phenotype we get. Whether they are in its recessive form, they form the new phenotype, or whether they are both the allele is in their dominant form, again they form the different phenotype. समझ आ गई बात? So these are the collaborator genes which express themselves in a collaboration. जो collaboration में क्या करते हैं? अपने आप को express करते हैं, and the same Mendelian dihybrid ratio we can get from this cross. और same यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? Mendelian ratio देखने के लिए मिलता है in dihybrid cross, but the difference is, लेकिन difference क्या है? Here we get the two new phenotype. यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? दो new phenotype मिलते हैं. अगर Mendelian dihybrid cross की बात की जाए तो वहाँ पर all the offspring जो हमें मिल रहे थे 9:3:3:1 रेशियो में, all the four category were resemble to their parent. वहाँ पर वो सारे कैसे थे? अपने पेरेंट जैसे थे, लेकिन यहाँ पर वो अपने पेरेंट जैसे नहीं है. क्लियर हो गई बात? चलिए, नाउ नेक्स्ट we will be seeing the complementary gene, the inheritance of complementary gene. यहाँ पर हम बात करेंगे complementary gene के inheritance की, right? सर ये कोलैबोरेटर जीन है, ये इंटरस्पेसिफिक एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है या इंट्रास्पेसिफिक? ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जितने हमने एग्जांपल पढ़े हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, राइट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटर एलिलिक. ये कहाँ का एग्जांपल है? इंटर एलिलिक का एग्जांपल है. उसके बाद हमने जितने ही पढ़े हैं, फिलियोट्रॉपी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंटर एलिलिक, एंड दिस आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंटर एलिलिक इंटरेक्शन. ठीक है? स्टार्टिंग में जब हमने कोलैबोरेटर जीन स्टार्ट किया था तभी हमने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में, the genes these genes were present on different loci of a different chromosome, and when the genes are present on the different chromosomes on a different loci, so it means that interaction is called as interallelic interaction. चलिए, so the next type of inheritance is complementary inheritance. In complementary inheritance, we have seen that the genes express themselves in a complementary form. Again, complementary gene is also the example of interallelic interaction. चलिए देखते हैं. Next type is
कॉम्प्लीमेंट्री genes. So again, complementary genes is the example of interallelic interaction. कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी कहाँ का एग्जाम्पल है? इंटरएलिलिक का एग्जाम्पल है इंट्रैक्शन का. Here we have seen that, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? Both the genes, दोनों जो हमारे जीन्स हैं, राइट, दोनों जीन्स, both the genes are work or express themselves in a complementary way. Complementary, it means both the genes are independent to each other for the expression. Expression के लिए दोनों जीन हमारे क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे. क्लियर होगी बात? देखते हैं कैसे, हाउ. इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द एग्जाम्पल इज ऑफ flower colored in Lithyrus odoratus. Lithyrus odoratus, that is sweet tea. चलिए, तो इसमें हम क्या देखेंगे? फ्लावर के कलर का इनहेरिटेंस देखेंगे. हेयर द फ्लावर्स आर ऑफ टू डिफरेंट कलर. यहाँ पे जो हमें फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं वो दो डिफरेंट कलर के मिलते हैं. ईदर दे आर वाइट और ईदर दे आर पर्पल. या तो फ्लावर कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, और या फ्लावर कलर कैसा होगा? पर्पल होगा. वेयर द पर्पल कलर इज रिस्पॉन्सिबल, जहां पर जो पर्पल कलर है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो एक कोई जीन पेयर नहीं है. समझ आई बात? जब तक दोनों जो हमारे पास जीन है, हर एक जीन का कोई भी एक एलील अपने डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होगा, तब तक पर्पल फ्लावर हमें नहीं मिलेगा. तो यहां पर पर्पल फ्लावर के लिए दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल हैं. समझ आई बात? बोथ द जीन्स, जब तक दोनों जीन एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक वी डज नॉट गेट द पर्पल कलर. तब तक हमें यहाँ पर्पल कलर नहीं मिलेगा. हमें दोनों जीन्स के क्या चाहिए? डोमिनेंट एलील चाहिए एसोसिएशन में और कॉम्प्लीमेंट्री में, तभी हमें क्या मिलेगा? पर्पल फ्लावर मिलेगा. अदरवाइज वी डज नॉट गेट द पर्पल फ्लावर. तो इसको हम समझते हैं बाय सिंपल इक्वेशन. पहले में इक्वेशन देखते हैं कि हाउ द पर्पल कलर इज फॉर्म, कि पर्पल कलर मिलता कैसे है. बाय सिंपल इक्वेशन, एक छोटी इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे. सपोज हियर वी हैव अ रॉ मटेरियल. ठीक है, दिस रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज Chromagen, right? This chromagen is a colorless pigment. ये कैसा पिगमेंट है? Colorless pigment. This chromagen is converted into anthocyanin. कहाँ में कन्वर्ट होता है? anthocyanin, and this anthocyanin is actually the colored pigment. और ये क्या है? नॉर्मल पीएच पे पर्पल कलर colored pigment, and that colored pigment is nothing but a purple color, due to which the flower is पर्पल कलर, जिसकी वजह से जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं? पर्पल कलर के हैं. बट दिस पर्पल कलर और द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंथोसायनिन और कलर्ड पिगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. इसको कौन कंट्रोल करता है? दो जीन्स कंट्रोल करते हैं. देखते हैं कैसे. सपोज
To convert this raw material into chromogen, we have enzyme A, right? This enzyme A converts the raw material into chromogen. Then enzyme B is responsible for the conversion of chromogen into anthocyanin, that is the purple pigment, right? But for the formation of these two enzymes we have two genes, और इन एंजाइम की फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करेंगे? दो जीन्स कंट्रोल करते हैं. Here we have gene C for chromogen and here we have gene P for purple color, right? तो gene C is responsible for the formation of enzyme A and gene P is responsible for the formation of enzyme B. Clear हो गई बात? So until and unless, जब तक these both the genes are not present in its dominant form, we does not get the purple color. जब तक में purple color नहीं मिल सकता. समझ आई बात? How it is possible? Suppose if we have only this condition, suppose capital 1 dominant C we have, or we have suppose this genotype, ये genotype हमारे पास है. So only we have C in its dominant form, तो it means only enzyme A synthesis, सिर्फ enzyme A बनेगा, ठीक है. और जब enzyme A बनेगा, so it means raw material is converted only into chromogen, and that chromogen is colorless pigment. It means the flower color is white. It is not purple because यहाँ पर दोनों P recessive condition में है. This P gene is not synthesized the enzyme B. यहाँ पर enzyme नहीं बनेगा B वाला, इसीलिए जो chromogen है वो anthocyanin में convert नहीं होगा. So it means this genotype, ये जो आपका genotype है, this form the white फ्लावर, और ये कैसा फ्लावर बनाएगा? व्हाइट फ्लावर बनाएगा. समझ आ गई बात? सेम अगर यही जीनोटाइप सपोज इट इज फाउंड इन दिस कंडीशन, then what will happen? Here we have both the gene in its dominant form, both the enzyme are formed, दोनों एंजाइम बनेंगे, और जब दोनों एंजाइम बनेंगे so it means we have get the color pigment, that is the flower color is purple. तो फ्लावर का कलर कैसा होगा? पर्पल होगा, राइट? और ईदर वी हैव द जीनोटाइप both of the gene are in recessive form and it is present in its dominant form, only P is present. So what will happen when there is no formation of chromogen? So definitely there is no formation of anthocyanin, so again the color is not formed. तो फिर भी हमारे पास पर्पल कलर नहीं आएगा. और जब दोनों ही अपनी रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो फिर भी we does not get any color. समझ आ गई बात? So for one character, that is for obtaining the purple color, we need both of the gene in dominant phase. समझ आ गई बात? It means here we have seen that two genes in its dominant form are responsible for controlling one character, that is the purple color. समझ आई बात? चलिए now let's see the inheritance of this and find out the ratios. देखते हैं whether the ratio are same or the ratio are different. देखते हैं क्या ratio मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो से मैच करता है या रेशियो मैच नहीं करता. Let's see. Should I rub this? No, sir. Pause.